Hi guys, I am Vikrant Massey and you're watching and listening to me on Connect FM Canada with Faridoon. Stay connected. सो गुड टू सी सच अमेजिंग रिव्यूज़। आपको अच्छे रिव्यूज़ की आदत सी है, लेकिन मुझे लग रहा है ट्वेल्थ फेल ने कुछ ऐसा किया है जो कि शायद अब तक आपके साथ में नहीं हुआ है। It's done something that has never happened before. It's a very special. बहुत से आप स्टीरियोटाइप्स आप ब्रेक करते हैं, जो कन्वेंशनल की बॉडी होनी चाहिए, एक सर्टन चिकना चिकना फेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली मेक्स यू डू व्हाट यू डू? व्हाट इज योर मैडनेस एग्जैक्टली लाइक? I want to represent the marginalized. Marginalized थोड़ा सा ज्यादा serious हो जाता है because I don't come from a marginalized section, but I definitely come from a section of society which has been overlooked. अपने को स्टार्स की रिस्पेक्ट अर्न कर पाना, उनकी आंखों में उनकी बॉडी लैंग्वेज वो इज्जत देख पाना कितना कितना ज़रूरी है टू टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ योर पीयर्स, ऑफ योर डायरेक्टर, ऑफ पीपल विद इन फिल्म इंडस्ट्री। It is the most important thing. मेरे लिए it is the most important thing to be respected for what I am and also what I do. सो आपका क्या प्रोसेस होता है रिसर्च का या तैयारी करने का? व्हाट इज योर मेथड लाइक? So there is no one method per se. एक चीज ये है कि I prefer spending a lot of time with my writer director. विक्रांत मैसी, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया फरीदून भाई, सो गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम यार। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो गुड टू सी सच अमेजिंग रिव्यूज़। आपको अच्छे रिव्यूज़ की आदत सी है, लेकिन मुझे लग रहा है ट्वेल्थ फेल ने कुछ ऐसा किया है जो कि शायद अब तक आपके साथ में नहीं हुआ है। जी जी, it's done something that has never happened before. But it's also a film that I have never done before. It's a very special film. One of the reasons why people are probably sending on their love and blessings is because it's a very different film. It's a very special film. यू नो, वी आर लिविंग इन एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स। ये साल बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा कमाल का रहा है, लेकिन एक ये जो ट्रेड पंडित्स का एक जो जो एनालिसिस था कि सिर्फ सर्टेन टाइप ऑफ फिल्म्स विल डू वेल इन द ऑन द बिग स्क्रीन, जो कि इवेंट फिल्म्स होंगी जिसमें बहुत बड़े बड़े गाने होंगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, या फिर एक सर्टन वाव फैक्टर होगा। लेकिन ट्वेल्थ फेल उन सब फैक्टर्स को जो है वो ब्रेक करती है। इट्स द सॉर्ट ऑफ ग्रोथ दैट इट इज़ शोइंग, इट्स एक्सट्रीमली हार्टनिंग। और जिस तरीके का वर्ड ऑफ माउथ है, तो वो फिर ये बहुत ही क्लियरली लंबे टाइम तक सिनेमा हॉल में ये पिक्चर रहने वाली है, बिकॉज पीपल विल स्मेल इट एंड फाइंड इट्स वे टू द सिनेमा हॉल्स। So how do you look at this unique phenomenon कि after pandemic maybe 12th Fail maybe is one of the films that has literally surprised everyone with its performance? Box office की बात करूँ तो पहले I don't really know much about trade, and I'm sure there are reasons why there are certain things out there, like there will, जैसे आपने सवाल पूछा कि there will be a certain specific, so there will be specific kind of films that will work at the box office, and that is also true. But I think analysis hai, there are analysis to back it, but then you put it the right way. You know, it's a phenomena, if I am to put it that way, or it's a rarity for a film like 12th Fail to sort of just go against the tide. और आई थिंक वो हुआ है, पहले भी हुआ है। और ये बात भी सच है कि देर are these event films which are doing really, really well, and the last year and a half, they are proof of it. But I also very firmly believe that there are some things that you cannot analyze. There are some things that you cannot bracket or put in a box, and 12th Fail happens to be one of that. It is penetrating so many things, and it's connecting with people directly. And that is probably one of the reasons why the film has got or is still getting the amount of love that it is getting. I don't know, Faridoon bhai. I mean, I think the power of storytelling. I think usko aap, as I said, there are analysis, but then there are some things that go beyond,
and I think this film happens to be one of that. The power of storytelling is something special. I think, it can break barriers, it can transcend borders, it can do certain things which all of us, I think, have always known but haven't experienced in a very, very long time. And here comes a film which is resonating with not just the students but everyone alike. एंड या आई मीन मैं और क्या ही बना सक कह सकता हूँ. आई डोंट नो, इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग. नहीं देखिए आपको अंदाज़ा अगर ऑब्वियसली यू पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री so you would know it as well. पैंडेमिक के बाद में ये दिस इज़ लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बिकॉज आई एम श्योर कि विदु विनोद चोपड़ा जो है बहुत जिगरा है उनके पास में. जाने जाने भी दो यारों के टाइम से वो खेल रहे हैं वो. और ही अंडरस्टैंड्स आई थिंक द बिजनेस वेरी वेल. ही इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर and he understands how first of all to make a viable project. I wouldn't say product because मुझे लगता है product थोड़ा सा at times cinema is an art form, so I think थोड़ा सा उसको मुझे लगता है कुछ हद तक at times demeaning हो जाता है. लेकिन ये एक इससे बहुत सी और फिल्मों को एक लीज ऑफ लाइफ मिलेगी. उनको मौका मिलेगा रिलीज़ होने का थिएटर में. So in that regard, I think this is going to be a trend-setting film in more ways than one as well. I hope so. I hope so, because there are so many filmmakers out there or storytellers out there who want to go out there and tell their stories, but then there is a certain mechanism uh, that sort of precedes every business, and and that is how it is. But I hope that with 12th Fail, there are people out there who probably feel reassured that no matter what, they can go out there, make a film with very good intent. I think it begins there. The credit for this, purely as you said, goes to Vinod sir, but not because he's an extraordinary producer, but because the intent with which he made the film was absolutely pure and sincere. And that has been the case since day one. And that is what is transcending everything that we are speaking about. That is what people are seeing beyond everything. वो इंटेंट देख रहे हैं लोग, और इसीलिए शायद लोगों की आंखें भर रही हैं, बिकॉज वो कोई गिमिक नहीं है कहीं पे. पूरी प्योरिटी के साथ वो जो कहानी है मनोज कुमार शर्मा जी की, उसको आपने पूरी ईमानदारी से बताने की कोशिश की है. As a filmmaker, as a director, writer, and editor, he has juggled so many hats on this film. He's also the producer, he's the director, he's the writer, and the editor of this film. What he has done remarkably well, probably, is that he has been very sincere and did not want to sort of deviate from the storytelling aspect of it. Because parallelly, what we are also getting to read on social media, which is partly true, that it's a small film. It was not marketed the way an average, especially during festive season, the kind of films, the way they are marketed, or the amount of investment that goes into it, it is none of it. But yet it is growing day by day. It's probably because it is resonating with people and the word of mouth. और लोग भी जाके शायद, और word of mouth ही है. आज हमारा छठा दिन है, एंड आई नो कि लोग वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ही जा रहे हैं. इट्स बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. उन्हें शायद कोई मायने नहीं लगता कि वो कितनी बड़ी फिल्म है या छोटी फिल्म है. वो कहानी से रिलेट कर पा रहे हैं, अपना अंश उस कहानी में देख पा रहे हैं, इसीलिए वो अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको बोल रहे हैं कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए. एंड आई थिंक ये प्योरिटी है इसकी, और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो विनोद सर को जाता है. बिकॉज he's not compromised on anything. He's not done anything to go and please anyone or appease a section of the audiences. No, he's just made a film which he felt had to be told a certain way, and he made it, and people just grabbed it with open arms. Right. So he has made Munna Bhai in the past. He has made Three Idiots in the past. PK as well. And so he has always questioned the system. He has always questioned the norm कि यही होता आया है और यही शायद सही है. So his films have always questioned that, and he has supported them, and he has gone all out in terms of supporting the idea behind it. यहाँ पर जो एक रीस्टार्ट की बात है,
वो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर सो मैनी पीपल, बिकॉज सो मैनी यंगस्टर्स वो सिर्फ प्रेशर के चलते बहुत सी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। या यहाँ पर आप रीस्टार्ट की बात कर रहे हैं। जी। एंड दिस वन वर्ड इज सो एम्पावरिंग। अगर आप उसको देखें ध्यान से, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करने की कोशिश की है, द अमाउंट ऑफ मैसेजेस एंड कॉल्स वी आर गेटिंग अबाउट व्हाट पीपल हैव फेल्ट after watching the film is remarkable, is remarkable. There are so many people out there who felt empowered with the word restart, probably because this word encapsulates life in itself, right? All of us, irrespective of what background we come from, all of us have to go through the mundane challenges that life brings, and we have to pick ourselves up. We have to move forward. And as you so rightly said कि जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टूट के बैठे हुए थे, और शायद उस उन लोगों को इस फिल्म से जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो हिम्मत हार के बैठे हुए थे, जिन्होंने शायद अपना कल बेहतर सोचने की भी कोशिश नहीं की थी, वो थोड़े से एम्पावर्ड फील कर रहे हैं। एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस थिंग। इट इज सिनोनिमस विद लाइफ। एंड आई थिंक जो कुछ भी है, यू नो, हम सब के अंदर जो एक एक जज्बा है, जीने का जज्बा जो है, सपने देखने का जज्बा, उन्हें पूरा करने का जज्बा जो है, कहीं ना कहीं जीवन की जो जो एक एक रिदम है, उस वजह से हम बहुत सारे लोग टूट के गिर जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं, हताश होकर बैठ जाते हैं। एंड दिस इज एन एम्पावरिंग वर्ड, एंड आई थिंक इट्स रिमार्केबल, यू नो, इट्स सो वंडरफुल। आई एम सो ग्लैड दैट जो हम कहना चाह रहे थे वो लोगों तक पहुंची है वो बात। ऑलराइट, सो विक्रांत, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि दैट बहुत से आप स्टीरियोटाइप्स आप ब्रेक करते हैं, जो कन्वेंशनल की बॉडी होनी चाहिए, एक सर्टन चिकना चिकना फेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस अगर आपका, जब मैंने देखा तो मतलब आई वॉज सो अमेज्ड, एंड दैट यू हैव दिस यूनिक एबिलिटी टू सरप्राइज। और आई थिंक किसी भी बड़े एक्टर की जो एक पहचान होती है कि वो आपको सरप्राइज कर दे अपने मेयर मेयर एग्जिस्टेंस से, उस किरदार के एग्जिस्टेंस से, एंड वो जो भी करेगा उसके बाद, तो आप उसकी फिजिकलिटी से ज़्यादा आप उसकी इंटेंट को देखेंगे। उसमें जो एक एनर्जी है उस वक्त जब वो कर रहा है, उसको आप देखेंगे, एंड यू जस्ट कंप्लीटली गो विद द फ्लो, which is something that you always manage to pull together. Um, थैंक यू फरीदून भाई, थैंक यू कैसे? सो मच, वेरी जेनरस। Not generous at all. I think criminal justice, for example, I'm just giving one example. Same with 12th fail. You really surprise the audience, and you have this ability to do it every single time. You're a very ambitious actor. It clearly shows. ये आपका, what exactly makes you do what you do? What is your madness exactly like? आई डोंट नो एक्चुअली, आई रियली डोंट नो। I don't have a specific answer for this, but I think uh, a lot of it stems from the fact that uh, I want to represent the marginalized. Marginalized थोड़ा सा ज्यादा serious हो जाता है, because I don't come from a marginalized section, but I definitely come from a section of society which has been overlooked, and that angst within me is there, and I want to sort of represent the common man. I have always aspired to represent the common man. I have aspired to be their voice through the privilege that I have. क्योंकि सच कहें तो 10 साल पहले ये प्रिविलेज, ये प्लेटफॉर्म मेरे पास था नहीं कि मैं लोगों की बात लोगों तक ला सकूं। आज मेरे पास वो एक पॉसिबिलिटी है। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड और recognized the fact that my todays are better than my yesterdays, and a lot of it is because of those very common people who have stood by me for the last 20 years. चाहे फिर वो 10 साल टेलीविजन के हों या 10 साल सिनेमा के हों, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी बात सुनी है, और कहीं ना कहीं मेरे किरदारों में अपने आप को। सो आई वॉन्ट टू गो आउट देयर, रिप्रेजेंट द कॉमन मैन, एंड टेल देयर स्टोरीज, एंड maybe because I come from a similar background, maybe because
बहुत सारी चीजें मेरे अंदर हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, अपने काम के जरिए कहता हूँ, इसीलिए वो एक एक मैडनेस दिखती है. बट देर इज नो स्पेसिफिक आंसर टू दैट ऑल्सो, फरीदुल भाई. दिस इज वॉट आई थिंक इट इज. ओके, आई थिंक एक एक किसी भी आई थिंक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अपने को स्टार्स की रिस्पेक्ट अर्न कर पाना, उनकी 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 आंखों में उनकी बॉडी लैंग्वेज वो इज्जत देख पाना. जैसे अगर दीपिका की बात करें फॉर एग्जांपल, छपाक में जिस तरीके से आपने साथ में काम किया, या फिर और भी बहुत से आपके आपके जो को एक्टर्स रहे हैं, तो वो एक एक रिस्पेक्ट फैक्टर उनके उनके अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए होता है. कितना कितना ज़रूरी है टू टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ योर पीयर्स, of your director, of people within the film industry? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेरे लिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट आई एम एंड ऑल्सो व्हाट आई डू. Self-respect and dignity and integrity have been right at the forefront for me before everything else. And अगर वो नहीं है तो फिर लाइफ नहीं है मेरे हिसाब से. एंड आई एज आई सेड, आई कम फ्रॉम एन ओवरलुक्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. हमारी लड़ाई जो है वो इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की ही रही है पूरी जीवन. एंड इट स्टिल रिमेन्स द सेम, whether it is your peers or whether it is your audiences who you make movies for. उनकी इज्जत पाना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड आई थिंक फॉर मी दैट कम्स फर्स्ट बिफोर एवरीथिंग एल्स. Okay. You also someone who lets his work do the talking at times. um, certain चीज़ें आपके बारे में कही जाती हैं लेकिन आप चुप रहना पसंद करते हैं. यू लेट योर वर्क टू द टॉकिंग. फिर कहा यह जाता है कि अल्टीमेटली जो कर्मा है वो जो है आपको रास्ता दिखा देता है. आपके जो कर्म है वो आपको बत या तो इज़्ज़त दिला देते हैं या फिर इज़्ज़त नहीं दिलाते हैं. वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि जो आपके डिट्रैक्टर्स हैं, जो आपके बारे में अगर कुछ गलत सलत कभी कभार कह देते हैं, आप उनको बजाय इंगेज करने के यू लेट योर वर्क टू द टॉकिंग. हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर यू? Sir, it's very time consuming, and I know where this question stems from, and I would try to keep it brief. uh, I am someone who really has no bandwidth for all these things. सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे मुझे कम लगते हैं, क्योंकि 14-15 घंटे आप काम करते हैं, 4 से 5 घंटा आप सोते हैं, बाकी समय आप अपने परिवार के साथ बिताते हैं या फिर काम पे जाने के पहले तैयारी करते हैं. So these are distractions, as you put it rightly. I would rather just focus on what I have to do. And yeah, I think I just want to focus on what I have to do, sir. ओके. आपने डाइवर्स आपने किरदार आपने निभाए हैं, अलग अलग आपने सोसाइटी का आप हिस्सा बने हैं अपने किरदारों के ज़रिए. यू आर ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर्स हु हैज़ अ वॉइस, हु लाइक्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. कितना इम्पोर्टेंट है एक्टर्स के लिए अपने अपने समाज को असिमुलेट करना, उसको सेंसिटिव होना उसके लिए कि जो हमारे आसपास हो रहा है हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. वी कैन नॉट लिव इन ग्लास टावर्स. वी कैन नॉट बी लिविंग प्रिटेंडिंग एज इफ वी आर नॉट seeing or observing whatever is happening around us, because वो एक्टर्स की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उस पर नज़र आएगा. लाइक नसीर साहब फॉर एग्जांपल, आपको उसमें उनके जो रियल लाइफ और जो उनके जो उनके किरदार होते हैं, आपको जब सर्टन कैरेक्टर्स जब वो प्ले करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप उनको कन्विंसिंग आपको लगता है कि यार हाँ यार ये आदमी रियल लाइफ में भी इसके अंदर दम है. ही नोज़ व्हाट इज़ टॉकिंग, ही वॉक्स हिज टॉक. कितना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू मे बी एट सर्टन पॉइंट, हर वक्त ज़रूरी भी नहीं है कि आप एक्सप्रेस करें, लेकिन टू बी सेंसिटिव टू वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू? It is important, sir. Or society and art, or any form of art, whether it is painting, writing, or एक्टिंग या सिंगिंग या कोई भी कला है. आई थिंक ये बहुत पुरानी कहावत है और ये सच भी है कि सोसाइटी एंड आर्ट go hand in hand. They represent each other, especially the current times, you know. So I cannot speak for others. There are so many people who are in the world of movie making for many different reasons. I can only speak for myself, and I think it is imperative to be cognizant of at least acknowledging
the issues of the day, or the voice of the day. It's very important. और आपने भी ये कहा कि जरूरी नहीं है कि हर फिल्म हो या हर किताब हो या हर पेंटिंग हो वो एक चीज रिप्रेजेंट करे. देयर आर मेनी मेनी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग. When you believe that you are living in a democracy, when you are living in a world when you want to be heard with equal respect and dignity, I think the others also need to be given that. ठीक है. तो हो सकता है कई बार आप बहुत सारी चीजों को सब्सक्राइब ना करें. अ, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो आप कहना चाहते हो उनसे लोग सब्सक्राइब नहीं करें. बट द आइडिया फॉर मी इज टू टू नो वेयर आई एम, मोस्ट इंपॉर्टेंटली to acknowledge my reality or my ideology and go out there and share what I have to share through my stories that I do. It is important. It is imperative rather. But as you also said it, not all the time. हम कलाकार हैं, हम आर्टिस्ट्स हैं, और हम भी उसी समाज से इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं जिनके लिए हम काम करते हैं. सो from time to time, I think it's a responsibility to go out there and sort of reflect light at least on what needs to be spoken about. ओके, आपने कहा कि शूटिंग से पहले तैयारी इम्पोर्टेंट है. सो आपका क्या प्रोसेस होता है रिसर्च का या तैयारी करने का? व्हाट इज योर मेथड लाइक? So there is no one method per se. एक चीज ये है कि आई प्रिफर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद माय राइटर डायरेक्टर. आई प्रिफर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एटलीस्ट, क्योंकि सब अपनी जिंदगियों में इतने बिजी हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम सबका कलेक्टिवली इकट्ठे मिलके दे पाना मुश्किल हो जाता है. बट 10 दिन या 15 दिन भी अगर मिल जाएं तो वो काफी हेल्प हो जाती है सर. बिकॉज द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई डू, दे आर मिड बजट फिल्म्स. दे आर नॉट फिल्म्स वेयर इन you can go on set and shoot 5 shots a day and come back. You can't do that. So I prefer rehearsing a lot, going beyond the written word. uh, as I said, I have always been an actor who's observed and executed. uh, यही सारी चीजें, just to go beyond what is already written, to find what is in between the line and to be thorough. I think it's very very important because this is an expensive business. This is an expensive business, so you really have to take onus of those 200 250 people who are on set. जब तक आप कैमरे के सामने नहीं आएंगे, वो लाइट वाला लाइट लगा के बैठा रहेगा, and your producer will keep losing money. That cannot happen. So I think to be thorough is one thing, but as I also said, there is no one method per se. There is no one method per se. I want to tell human stories. I want to represent the human resilience, the indomitable human spirit. It could be through various genres. For example, a film of mine which is of a completely different genre, like a Haseen Dilruba, or an out and out mass entertainer like Mirzapur. But I have somewhere down the line found that thread of human resilience and spirit through different genres as well. So that is what remains key for me even today. नसीर साहब का मैंने जिक्र किया. अब एक और उनका ही एक इंटरव्यू का एक मेरे मेरे जहन में आ रहा है. एक उन्होंने कोई फिल्म की थी, मैंने फिल्म का नाम नहीं लूँगा, कमर्शियल फिल्म थी, आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म थी, और उसमें उन्होंने एक विलन का रोल प्ले किया था. तो उनसे किसी ने पूछा कि आप पैरेलल सिनेमा के आप पोस्टर बॉय थे, और फिर आपने ओए ओए किया, तो फिर आपको कहा गया कि आपने यू ब्रोकन दैट entire prism in a way, and you've been a sellout. सो अगर आपने ये जो फिल्म आपने करी है, तो ये ऐसी फिल्म आप क्यों करते हैं? तो उन्होंने नसीर साहब ने कहा कि ऐसा है कि मुझे अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर जैम भी रखना है. तो मुझे मुझे हर तरीके की फिल्में मैं करता हूँ, और बहुत सी फिल्में तो अपनी मैं देखता भी नहीं हूँ. मेरे लिए मेरा जो पैशन है वो थिएटर है. आपके लिए एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, what is your approach like, that in terms of how crucial art is for you, how is it important for you to balance out things? One has to pay bills, one has ambitions as well. Like you've answered the question for me, to balance it.
The idea is to balance it. I mean, everyone has their reasons. And the reason I say who are they, और खास तौर पे आज के जमाने में तो आर्मचेयर एक्टिविस्ट जो हैं सोशल मीडिया पे आके अपना बयान दे देते हैं, बट दे शुड लुक विद इन टू बिगिन विद यू नो अगर वो नसीर साहब जैसे आदमी को सेल आउट कह सकते हैं, या आज के दौर में बहुत लोगों को ऐसा कहा जाता है दे आर सेल आउट्स, दे आर दिस एंड दैट, आई मीन वो अपने गिरबान में खुद पहले झांक के देख लें तो बेहतर होगा. Everyone has their reasons. Everyone has a family to feed. Everyone has bills to pay. Everyone has their priorities. तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप, और अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो जरूरी ये नहीं है कि, अब ये नहीं है कि ट्वेल्थ फेल मेरी इतनी इतनी अच्छे से रिसीव हो गई है तो मैं सिर्फ ट्वेल्थ फेल जैसी फिल्में ही करूंगा, ऐसा नहीं. आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गो आउट देयर एंड showcase the different things that I can do. I, in a calendar year, I do 3 to 4 films a year. I make sure that I do different genres. I also switch from what I've done previously. And the idea is to balance it out. But the core of it, as I said, remains to tell human stories, to tell stories which people enjoy watching, uh, stories that people can take home. Today, you like a film that I have done, tomorrow, you might not. Now, I am not really going to sit back and worry about the fact that, oh my God, ये फिल्म तो इसको पसंद ही नहीं आई. There will be another taker for it. You might not take it, but there will definitely, you always find your tribe. The idea is to tell different stories, to balance it out, and to design your life the way you want to, rather than be dictated by somebody who does not even know you or where you come from. So I mean, you can't take all of them seriously.